So, ladies and gentlemen, boys and girls, Rashid Khan, the Rashid Khan on my YouTube channel is amazing. Okay, all right, let's start the show. So, I believe you're in a training camp in Abu Dhabi. Yeah, Abu Dhabi training camp. Yeah. So, how's fitness training going on? At what levels are you? How many kilometers are you running a day? Well, we had the test yesterday, which you have to run 2 kilometers in 8.5 minutes, which we did that in a weather of 40 plus here. It was super hard, but it was good. Yeah, all the guys they passed it, which was great to see, and the average was 8 minutes 20 seconds, so which was great for everyone. So pretty hard, but that's what you have to be. If you want to be the best, you have to do that. 2 kilometers in 8.5 minutes at 40 degrees. एक बार हम try जरूर करेंगे जितने भी fitness influencers हैं वहाँ पर they should give this a shot. नहीं उसके लिए वो don't try it at home वही. Yeah, correct. Don't try it at home. But Rashid, you've come, a long way from, how it all started for you, and जहाँ पे आज आप हैं, you're an icon which is being put, ऐसा नाम which has been put with legends in the spin. And what does this mean to you, especially, what does Rashid Khan mean to Afghanistan? Well, it's a kind of like a dream, not only for me, for the whole country. If you think like before 7-8 years, no one would have thought like, someone from Afghanistan will be at this point that he will be all around and he will be counted in that list. Like, even me myself, I never thought about to be at that point. Sometimes I'm just thinking that is that a dream or like, that I'm here at this point and taking 500 wickets in T20 in just 6-7 years. I think it was more than a dream for me, and I do think about that. But so happy for Afghanistan. Like, wherever I go, it's just mention my name, like, Afghanistan before my name, and that is something I love the most. I play in IPL. Whenever I take the wicket, commentators always say the guy from Afghanistan. So that is everything for me, because now Afghanistan is well known as well everywhere because of the sports, like the quality of the cricket we are the players playing, and the amount of achievement we had as a team, which is making the nation proud, and people now remind Afghanistan as on a very positive note. So which is I'm so happy for that, and so proud to be someone like to be a part of this beautiful team, and to be someone like to give in that kind of a different and positive image to people back home, and which I'm so lucky, and I'm just trying my best to keep that continue and make the country more and more proud. Yeah, you've changed the game for the country, and I always think that how sports has a capability of changing the face of a country economically, financially, and just through sports. I mean, MS Dhoni has been able to do it for my state, which is Jharkhand, and this is of course the Jharkhand is a state, but here you've done it for your entire country. लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आज की डेट में भी इतना टफ होता है प्लेयर्स के लिए फ्रॉम अफगानिस्तान टू राइज अप द रैंक्स. वेल बहुत मुश्किल होता है. सबसे पहले जो बात होती है अपॉर्चुनिटी की होती है कि यू गेट द अपॉर्चुनिटी एंड जो हार्डली हमें मिलती है, स्पेशली अगेंस्ट द बेस्ट अपोजिशन यू वांट टू प्ले इन. दैट इज वेरी हार्ड फॉर अस टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू प्ले अगेंस्ट द बिग टीम्स. It's quite surprising that I haven't played any T20 against New Zealand yet, and it has been 8 years. I haven't played any ODI against New Zealand, and the rest like Australia, New Zealand, England, against them I played only once or twice in ODI. So that is something like as a youngster, like if you get that opportunity to play with them consistently, that's how you're gonna be, how your talent will be seen, and you will get the opportunity to play all around the world. But the best thing is nowadays more leagues there, and the guys from Afghanistan, they're coming up and they showing their talent in those leagues, which is great. And we have seen lots of spinners coming from Afghanistan. Now, what is with that? Why? Is there a reason? Is there a specific reason? Or because you're the role model and that's the reason why everybody wants to follow you? Well, in Afghanistan, before there was no much games on the TV. There was cricket, there was national team, but not much games on the TV, which people knows what's happening there. Like, who should be their role model and who they should follow, how he plays, and how he becomes famous. Like, but since we start playing, especially in IPL, like, we got that kind of fame, we got that kind of name, and then that is something which totally changed the mindset of the people back home.
I still remember I went back home after first IPL and they were like in one academy lots of spinners. Even though fast bowlers they changed to the spinners, which shows like that country they just want someone of his role model that I want to be Rashid Khan, I want to be Mohammad Nabi, or I want to be Mujib Zadran, which is leading from the front in Afghanistan spinning attack. So I feel like that had a huge impact, especially like in India. If you see lots of quality batsmen are coming, just because of the history. And but same in Afghanistan, we're struggling to get the batsmen, but spinners there is so many spinners, and then still lots of more to come. In domestic, we have so many spinners, but it just need a kind of opportunity. They rise and they get in, they show the talent. Yeah, but you're also quite the idol when it comes to batting. We've seen you contribute with the bat, especially this time in the IPL. That score that you put up against Mumbai. तो आप भी तो और आप तो ओपन भी करते थे ओपन स्टार्ट ही ओपन से किया था क्रिकेट जब शुरू की थी तो मैं बैट्समैन था बॉलिंग के साथ टू बी ऑनेस्ट इतना शौक नहीं था मैं एक दो ही मैच में डालता था वो भी बोरिंग होता था मेरे लिए लेकिन धीरे धीरे मतलब वो जो एक बंदे में क्वालिटी होती है स्किल्स होते हैं लेकिन उसको वो अभी सही पॉलिश नहीं किया होता है और उसको तो बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं इस चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दूं इसको ज्यादा वर्क करूं इस पे तो मे बी आई गेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले एज अ बॉलर देन अ बैट्समैन बट स्टिल आई वांटेड टू बी अ बैट्समैन आई डिडंट वांटेड टू बी कॉल्ड अ बॉलर सो डोमेस्टिक में परफॉर्म हो गई बॉलिंग में हो गई बैटिंग में हो गई लेकिन किसी ने कुछ कहा ही नहीं बॉलिंग में हो गई तो सबने कहा कि एक बॉलर आए तो तब से वो बॉलर का स्टैंप लग गया मुझ पे और नेशनल टीम में भी जब आया तो हार्डली मुझे बैटिंग का चांस मिलता था कि मैं जाके लेकिन पहले 3, 4 या 5 साल में जब नेशनल टीम के साथ गुजारे तो वहाँ पे मेरी फोकस इवन 50% भी नहीं थी बैटिंग पे पूरा फोकस बॉलिंग पे था कि बॉलिंग को मैं ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करूँ लेकिन जितनी बैटिंग मैंने पिछले 2 साल में गुजरात में की है मैंने अपने 8 साल की करियर 9 साल की करियर में इतनी बैटिंग नहीं की जहाँ जितनी बैटिंग मुझे वहाँ पे मिली है तो वही से वो कॉन्फिडेंस भी मिल गया और वो जो टीम का जो आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि बंदा कर सकता है तो जब भी मैदान में जाता हूँ तो वो माइंड में होता है कि नहीं मेरे पीछे मतलब वो कॉन्फिडेंस मुझे कोचेस ने दिया है मुझे अपॉर्चुनिटी दी है अपने स्किल्स को बेहतर करने का तो मैंने काम किया अभी जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव रहना है और उस पर बिलीव करना है तो वही था पिछले 2 सीजन जो आईपीएल में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे बैटिंग अच्छी हुई अब आपने आईपीएल की बात छेड़ी दी है तो आप मुझे बताएं 2023 सीजन आपके लिए कैसा गुजरा बिकॉज इन टर्म्स ऑफ विकेट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स दिस सीजन 27 विकेट्स लिए हैं आपने yes 27 yeah was a kind of a different IPL for me even though you're going for runs as well which I bowled with the economy of 8 which for me it's a little bit more but I always wanted to finish up the tournament with the economy of 6 in 6.5 which I mainly focus on but this year it was totally different the wickets in the mindset of the players in that impact player which put less pressure on the batsman that yes you're gonna go after him but anywhere I made a little mistake वो हमेशा मेरे पीछे जाते और रन्स करते थे तो वो एक डिफिकल्ट होता है लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको विकेट्स भी मिलती थी वही था कि यार 27 विकेट मैंने हासिल की जो मेरी हाईएस्ट है आईपीएल की जितने भी मैं सीजन्स खेला हूँ तो विकेटिंग वाइज वाज अ ग्रेट सीजन आल्सो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन की लेकिन थोड़ा अपसेट था अपनी इकोनॉमी पे कि मैं थोड़ा और बेहतर कर सकता था उसको 6.5 पे ला सकता था तो दैट इज द काइंड ऑफ लर्निंग यू गेट फ्रॉम एंड इन अ बिग स्टेज तो ओवरऑल ग्रेट सीजन था और एक अच्छा माहौल था अनलकी नॉट टू बी फिनिशिंग ऑन द फाइनल बट वाज अ काइंड ऑफ सीजन के मैं बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ और सबसे बेस्ट ये था कि आपको हर मैच में कंडीशन मिलती थी और उसमें आपको खुद को एडजस्ट करना वहाँ पे परफॉर्म करना तो एक किस्म की बेस्ट प्रिपरेशन थी मेरे लिए वर्ल्ड कप के लिए भी जो वर्ल्ड कप आने वाला है कि आप डिफरेंट सिटीज में खेलो आप पे कंडीशन के साथ और थोड़ा यूज्ड हो जाओ तो वाज अ ग्रेट आईपीएल एंड या hopefully will try my best to beat this performance next. Yeah, fingers crossed, and I'm pretty sure you would. But I'm going to take you back to a memory of yours that is stuck by me. वो जो मैच था रिंकू सिंह जिसने 5 छक्के मारे and you were the captain of the team that day. वो याद मत दिलाओ. अभी भूल गया. I was actually only looking at you. I mean, जो expressions थे ना, I could only imagine कि what you must be going through. Well, जब 5 बॉल रह गए to be honest, तो 5 बॉल पे around 27-28 रन रहते थे, तो मैं वैसे सोच रहा था कि चलो ठीक है 2 बार कैप्टेंसी मिली है 2 मैचेस जीत गया.
तो एक चक्कर लग गया, मैंने कहा भाई अल्लाह खैर करे, ये क्या है, तो बस कुछ भी हो सकता है। दूसरा लग गया, मैंने कहा चलो एक तो डार्ट हो जाएगा। आखिरी बॉल पे जब आई थिंक 4 रहते थे कि 5 रहते थे आखिरी बॉल पे भी, तो मैं सोचा कि भाई ये तो Yeah. दूसरी तरफ ही जा रहा है। तो एक अलग ही वो मोमेंट था, अनबिलीवेबल था यार। 5 बॉल पे 5 छक्के चाहिए और ही डिड दैट। तो वो एक दिन होता है जहाँ पे आपको जो भी करते हो सही काम नहीं करता। टू बी हॉनेस्ट, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ऑल, लाइक यू नो द डिलीवरीज, वांटेड टू बॉल यॉर्कर्स, वाइड स्लो वन, बट एवरीथिंग वाज कमिंग इनटू हिज रेंज। जहाँ पे वो Yeah. चाहता था वही उसके लिए आता था। तो and he was middling, he was not aging any ball, like middling and clearing the boundary. So मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, बस ये भी एक लर्निंग है हमारे लिए अपकमिंग गेम्स के लिए कि नेवर थिंक लाइक यू नो दैट आप मैच जीत गए। जब तक अंपायर कॉल ना करे कि टीम जीत गई, तो तब तक जो है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो या इट वाज अ काइंड ऑफ गेम फॉर मी, लर्निंग एज वेल दैट कल अगर हम भी इस स्टेज पे होंगे और हम बैटिंग कर रहे हैं और हमें 3-4 छक्के चाहिए, तो वी शुड हैव दैट बिलीव दैट इट्स पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, बट एज लॉन्ग वी हैड दैट राइट माइंडसेट। तो या इट वाज अ वेरी हार्ड टू फॉरगेट दैट डे, but Yeah. learning in future which was great for us. और किसी ने फिर भूलने भी नहीं दिया, बताया कि हम आज भी याद दिला रहे हैं। बट एट दैट मोमेंट did you think that यार मे बी हमसे गलती हो गई, या यू एट दैट मोमेंट वाज लाइक गिव इट टू रिंकू सिंह? बिकॉज एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे अ प्लेयर प्लेज लाइक अ मैन पोजेस्ड, रिंकू वाज प्लेइंग लाइक दैट। what was in your mind after the match was over? Well, you know, पहले तो बहुत सी चीजें माइंड में आती है कि ये करना चाहिए होता है, एक अच्छा यॉर्कर डालते तो मैच जीत जाते, एक मैच होता तो जीत जाते। तो वो चीजें हमेशा माइंड में आती है। लेकिन जब बॉलर के साथ आप बातचीत करते हो और वो जिस माइंडसेट से डाल रहा होता है, तो वो ट्राई कर रहा था। और जहाँ पे भी डालने की कोशिश कर रहा था, तो मैं पहले भी आके उसके रेंज में ही आता था। वो ऐसा था जिस तरह वो उसको ऑलरेडी पता ही होता था कि ये बॉल आने वाला है और मैंने इसको क्लियर करना है। तो और क्रिकेट में ऐसा है कि जब आप गिर जाते हो ना, जब बंदा आपको पकड़ लेता है बैट्समैन, तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता है उससे निकलना। मेरे साथ खुद भी 2-3 दफा हुआ है कि हमेशा आप कोशिश करते हो कि मैं अच्छा फिनिश करूं, तो अपोजिट ही हो जाता है। मैं चाहता था कि इधर बॉल करूं, लेकिन वो ऐसी एरिया में होता है जहाँ पे बैट्समैन चाहता है। तो सेम यश के साथ भी हुआ था। यश वांटेड टू बॉल लाइक यू नो दोस बेस्ट डिलीवरीज, बट इट जस्ट हैपेंड लाइक यू नो। एंड the kind of whole season Rinku had, you know, it's not only that game, you know, every game he had played, he had that kind of impact. And हमारे साथ कुछ ज्यादा ही किया उसने, ज्यादा ही ज्यादती की। लेकिन overall he had that kind of great season, and he had that confidence that yes, if there is only one person we can win the game, I should have been. I feel like that is very important to have that in the mind, that if 1% is there, I should be giving up my 100% to convert that to the 100%. So काफी चीजें मन में थी, लेकिन कोशिश कर रहा था कि जितना जल्दी उसको भूल जाए और हंसी हो जाए, टीम में हंसी माहौल हो। लेकिन आई फील द वे आशीष भाई एंड हार्दिक भाई kept the environment after that game was brilliant. No, absolutely. I think Gujarat has been a dominant figure ever since it's come into the IPL, and especially the kind of aggression you bring to the team, it's unbelievable. अब तो हम वर्ल्ड कप की ओर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एशिया कप है, and you're meeting 4 opponents in the Asia Cup जिसको आप वर्ल्ड कप में भी मिलेंगे। कोई स्पेशल प्रेपरेशन है? कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर एशिया कप राइट बिफोर द वर्ल्ड कप? वेल, एक चीज है कि आपको थोड़ा इस फॉर्मेट के साथ बैक यूज टू होना है। और क्योंकि काफी टाइम हुआ है, ओडीआई भी ज्यादा नहीं खेले, और अभी हमारी बांग्लादेश के साथ 3 ओडीआईज है जहाँ हमारे लिए होगी। और हमेशा जब भी हमने एशिया कप में पार्टिसिपेशन किया, तो एज अ टीम हम चेक किया और हमने टीम को टफ टाइम दिया है। लास्ट वी प्लेड एशिया कप वाज 2018 दुबई में था, जहाँ पे नियरली वी हैड एवरी गेम, यू नो, वी हैड ड्रॉ हुआ था इंडिया के साथ, और पाकिस्तान से हम लास्ट ओवर में हार गए थे। हमने श्रीलंका को बीट किया था, हमने बांग्लादेश को बीट किया था। तो वो एक काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन थी कि हम हमेशा अच्छा कर चुके हैं। लेकिन अभी काफी टाइम हुआ है, श्रीलंका के साथ भी हम ज्यादा खेल चुके हैं, बांग्लादेश के साथ भी ओडीआई खेल चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया विल बी लाइक यू नो फॉर अस दैट वी हैव टू डू वेल अगेंस्ट देम। इट्स अ काइंड ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन फॉर अस फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल। वी जस्ट नीड टू हैव दैट इन द माइंड में यही रखना है कि हम अगर इन गेम्स पे इवन तो अगर हम हार भी जाए तो दैट इज फाइन, बट एट द सेम टाइम हमारी माइंडसेट क्या है, हमारा अप्रोच क्या है, हमारा प्रिपरेशन, वो वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट प्रिपेयर होना चाहिए। ना कि हम ये मैचेस भी हारे और एट द सेम टाइम हम यहाँ से कुछ हासिल भी ना करें। तो हमारा एज अ टीम यही टारगेट होगा कि हम पूरा 200% एफर्ट करें,
ग्राउंड में, और जहाँ पे भी हमको थोड़ा भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करें। तो वही है कि इन स्पेशली वाइट बॉल पे आपको अगर वो मोमेंट्स आप कैच करते तो देन आप हमेशा गेम में होते। तो एज अ टीम बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए फिर बड़ी टीमों के साथ लॉन्ग फॉर्मेट खेलना, नॉट T20, लॉन्ग फॉर्मेट खेलना। तो हमारे यंगस्टर के लिए भी अच्छा है कि वो टेस्ट हो जाए बिफोर द वर्ल्ड कप, और एक दो डिफरेंट कंट्रीज में भी है, पाकिस्तान में होगा और श्रीलंका में होगा, तो वो भी एक चैलेंजिंग होगी कंडीशन के साथ खुद को यूज टू करना। लेकिन सेम फिर हम फेस करेंगे इंडिया में भी। अगर आप डिफरेंट कंडीशन में जाते हो, दिल्ली में डिफरेंट है, चेन्नई में डिफरेंट है, तो बैंगलोर में डिफरेंट है, तो हमारे लिए एज अ टीम वो एक अच्छी प्रिपरेशन होगी कि हम पाकिस्तान में कैसा करते हैं और श्रीलंका में कैसा करते हैं। तो अच्छी प्रिपरेशन होगी और कोशिश करेंगे कि इसको जितना यहाँ पे सीखे, क्योंकि वर्ल्ड कप में फिर आपको सीखने का ज्यादा वो नहीं होता, वहाँ पे आपने यू हैव टू परफॉर्म। और वहाँ पे मेरे हिसाब से एज अ टीम अगर हम जाते तो वी शुड बी नॉट जस्ट पार्टिसिपेटिंग, आई फील लाइक वी हैव द काइंड ऑफ टीम वी शुड बी विनिंग सम गेम्स एज वेल। सो दैट इज द माइंडसेट एंड होपफुली वी डू दैट देयर। We spoke about conditions. Now, Pakistan has shown apprehension about facing Afghanistan in Chennai because historically it's spin friendly. So you, एक तो पहली बात because of you, ये खौफ है. So what is your take on that? Well, एक एडवांटेज होती है आपके लिए कि वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक्स है और बॉल स्पिन होती है, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों टीम के लिए तो सेम ही होता है। दे हैव द क्वालिटी स्पिनर्स एज वेल, व्हिच बट फॉर मी लाइक ऑलवेज हैव वन थिंग इन द माइंड। हमेशा मैं टीम को भी यही बोल रहा हूँ कि हमने कभी भी किसी भी टाइम भी हमने कंडीशन पिच विकेट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हम उसके बारे में सोचे ज्यादा तो हमारे स्किल्स हमसे जाते हैं, हम अपने स्किल्स को भूल जाते हैं, और हमारा हमेशा फिर माइंड में वो विकेट होती है, वो ग्राउंड होता है। तो फिर अगर विकेट और ग्राउंड आपके स्किल्स को डिफाइन करता है तो दिन हमारे जो प्रैक्टिस है और जो मेहनत है उसका तो फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिच ही हमारा सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर अच्छी है तो हम 300 करेंगे, बुरी है तो 150 करेंगे, तो फिर तो वो हमारी मेहनत कुछ रही नहीं है, और हमारे जो अपने स्किल्स है उसका तो कुछ फायदा ही नहीं है। हमें जो टैलेंट है, अगर बैट्समैन है और वो पिनिंग ट्रैक में 50-100 कर रहा है तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम, ना कि एक फ्लैट विकेट पे एक बंदा 100 कर रहा है, तो वो तो फिर आई थिंक इजी हो जाता है। तो वही होता है कि अगर आपको चैलेंजेस सामने हैं तो आपने उस चैलेंजेस का सोल्यूशन निकालना है, ना कि उस चैलेंज को दूर करना है कि नहीं मैंने इधर नहीं खेलना है ये या वो है। तो आई फील लाइक पर्सनली कि जिधर भी है एज अ टीम में हमेशा टीम को यही बोलता हूँ कि नेवर थिंक अबाउट विकेट। लाइक मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती है जब टीम में वो डिस्कशन होती है कि विकेट ऐसी है वैसी है, ये है वो है, वो जो है वो देखा जाएगा, लेकिन हम एज अ टीम कैसे प्रिपेयर्ड है। अगर हम कभी कभी टीम में वो बात भी चले कि हम टॉस जीत गए तो मैच जीत गए, तो मैंने कहा भाई अगर टॉस पे डिसीजन है तो फिर हम रूम में बैठे रहेंगे, बस टॉस उधर ही करेंगे कि हमने मैच जीत लिया। तो हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव इस चीज पे है कि अगर आप अच्छी मेहनत करोगे और अच्छे माइंड प्रिपरेशन के साथ जाओगे, जैसी भी कंडीशन होंगी जहाँ पे भी होगी, डेफिनेटली यू विल फाइंड द सोल्यूशन फॉर दैट। सो एज अ टीम अगर हम चेन्नई में खेलते हैं तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ना कि हम बोले कि हमने उधर नहीं जाना है या नहीं खेलना है। तो वी एज अ टीम हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमने स्पिन ट्रैक में कैसी खेलनी है, फ्लैट पे कैसी खेलनी है और कौन से माइंडसेट के साथ जाना है। तो एज अ टीम हम इस माइंड से जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए भी कि हम विकेट्स को माइंड से निकाल के अपने स्किल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। Perfect. Now, Rashid, the fact that World Cup is happening in India, kahin na kahin is this also an edge for Afghanistan? Is because especially in this edition is because the players have had so much game time in this country. Training has also happened in this country. So, edge bhi it's like playing at home conditions. Well, it is, to be honest, it is because हम ज़्यादा खेल चुके हैं, हम डिफरेंट सिटीज़ में इंडिया में खेल चुके हैं। हमारा होम ग्राउंड ग्रेटर नोएडा था, फिर उधर से लखनऊ हो गया, फिर देहरादून हो गया, तो हम हर जगह पे खेल चुके हैं। इवन दो हम 2016 वर्ल्ड कप भी इंडिया में खेल चुके हैं, तो प्लेयर्स को वो आइडिया है कि हमने, लेकिन अब हम अगर थोड़ा सा मेहनत करें और हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें स्पेशली बैटिंग में, आई थिंक वी हैव दैट काइंड ऑफ बॉलिंग यूनिट जहाँ पे हम ज्यादा खेल चुके हैं। अगर आप देखिए नवीन उल हक खेल चुका है आईपीएल में, फजल हक फारूकी खेल चुका है, नबी खेल चुका है, मुजीब खेल चुका है, मैं खेल चुका हूँ, नूर खेल चुका है। तो बॉलर्स के लिए आई फील है कि इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन हम अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और बैटिंग में थोड़ा अच्छा टारगेट सेट कर ले तो बाकी इतना मुश्किल नहीं होगा। एशिया में ज्यादा विकेट जो है ना, अगर अफगानिस्तान भी हम खेलते तो वहाँ के विकेट ज्यादा से ज्यादा मतलब मैचेबल है इंडिया के विकेटों के साथ, तो वहाँ पे भी हम ज्यादा खेल चुके। तो मेरे हिसाब से कंडीशन इतना बड़ा इशू नहीं होगा हमारे लिए,
पहले खेल चुके हैं इंडिया में, लेकिन सिर्फ अगर वो प्रेशर होता है ना अगेंस्ट द बिग टीम, अगर उस चीज को हम थोड़ा कंट्रोल करते हैं ना और उसको थोड़ा पॉजिटिव साइड पे लेते हैं, तो आई फील लाइक वी कैन बी द बेस्ट टीम देयर टू परफॉर्म. No, absolutely. And I've always wondered, because मैंने 2019 World Cup में भी देखा था, that how does it make Afghanistan feel when Indian fans cheer for them, especially when you're playing against Pakistan. Indian fans are in full support of Afghanistan. There is no doubt in that we will get that support, and wherever we go, we will have that. I still remember, when we were playing against Bangladesh in Dehradun, and the stadium was full. It was like 25 to 30,000 people. Yeah. And they were cheering for us, and I felt like I'm playing in Afghanistan. That was the kind of feeling there, and even the whole team was like shocked. We never had that kind of support. We never had that kind of crowd in the ground as well, because we don't play in Afghanistan. Other countries we don't get that crowd, and that day the stadium was full packed, and they were cheering for us and as a team, and that was so beautiful, so beautiful. It was just like a kind of dream for us as a team, that we get that kind of beautiful support. But we expect that, definitely we will have that in the mind, that yes, support will be there for us. Even if there is 2-3 people as well, there will be support for us, and we will be having that on the positive side. Even though playing against India, there will be a little bit support for us still there. 100%. Yeah, but will be a great competition. It will be a great tournament for us, and we are so excited as a team to be there. We'll be there and playing against the big teams and performing there. Yeah. No, I've seen that support from the Afghanistan fans also for Team India, or especially personally, मैंने जितना interview किया Afghanistan fans को, that was during the World Cup only. The kind of respect that they have for Indian journalists and Indian presenters, I'm really thankful to every Afghanistan fan out there, because there's a lot of love that they reciprocate also to this country. Yeah, absolutely. There is lots of love, and always having that great relationship, and wherever we go, they very closely following the IPL, and whenever we perform, they're celebrating like Afghanistan team is playing there. So yeah, it is great. It is great that sports is bringing the people together, and that is the beauty, and that is something which I love the most in sport, that it brings people together, and it spread lots of love as well. So I've seen that in 2019 World Cup, and it was amazing and brilliant to see. All right, perfect. Now, we've come to the last segment, which is, as usual in an interview, it's like a rapid fire, but it's more important to get to know Rashid Khan a little better. मुझे पता है, you're like, यार ये हर बार करना पड़ता है हर interview. ठीक है. Rapid fire, nice. Just for some fun. So first of all, I want to know your cricketing idol. Shahid Afridi and Anil Kumble. Shahid Afridi and Anil Kumble. Your cricketing, of course, आपने bowling बोल दिया. But is there your favorite IPL moment that you'd like to tell us? A favorite IPL moment. Favorite IPL moments? There is 2-3 which I never ever forget. One is debut in IPL and the other against KKR in qualifier, where I scored 34, 3 wickets, 2 catches, 1 run out, was unbelievable. I still have all those memories in the mind. And in this year, I had the hat trick, which was my dream, to take a hat trick in IPL, and I got that. And scoring those 79 against Mumbai and 4 wickets was amazing. And the best and the beautiful moment of overall I will take is when I was batting there on 60 something and 1 KD, and all the crowd, they were cheering my name. That was the most beautiful moment of my life, that in Mumbai against Mumbai team, and they cheering my name. That was I will always have that in my mind. Wow, that's beautiful. Do you have a sporting idol from another sport? Well, yeah, Cristiano Ronaldo, especially as the fit he is, in the hard work he does, what he made of himself, the amount of hard work he did. So I feel like he is someone like my role model in. And Rashid, of course, I've read about this, that you would have been a doctor if you were not a cricketer. Is that true? That was the dream of my family as well, especially my mom. She had the dream that it will be great to have you a doctor in the whole family, because we had no doctor in the family. So even though I was very good in study as well, but when I came into this world of sports,
I think I just forgot everything. What kind of a doctor would you have been though? Like, Well, did you ever give it a thought? Like a well, surgeon, a heart surgeon, neurosurgeon? no. Yeah. Not a surgeon. Like no, it's pretty hard for me. I would be a just normal doctor. Like just if someone is sick, having fever, anything, I think I will be in that. I won't go in the surgeon area. No. It's pretty hard for me. We're No very, chance. very happy that you became a bowler because you're definitely not a normal bowler. Now I'm a spin doctor. Yeah, correct. Okay, all right. So, apart from cricket, would you like to have played any other sport? Football, I like football. Yeah, I used to play football as well at home, like mostly when cricket season was not there. So at home, especially at home, like with brothers, we were playing football. So yeah, football was always there in my mind. Perfect. Well, who do you think is going to be your biggest rival during the World Cup 2023? Your biggest rival? Of Afghanistan team? Yeah, of the Afghanistan team. Yeah. Well, it's pretty tough question, but yeah, it's I gonna feel like be you know the answer. Just say it. yeah. Whoever we play will be. Well done. Well played, Rashid. I know the answer. You know the answer, so it's fine. बट वेरी वेल प्लेड। मैं जब पहले पूछ रही थी मुझे पता था इसका जवाब तो नहीं मिलने वाला लेकिन पूछ तो लेते हैं। बट थैंक यू सो मच राशिद। या प्लीज Yeah, all good. नहीं बोलना। नहीं बोलना। But at the end of the day, I think I will wish you all the best for the World Cup and especially Asia Cup. जाते would you like to say something to the Indian fans and how has India's contribution been towards developing the Afghanistan team and developing players? Well, thank you so much first for having me, and after a couple of years, maybe we're having an interview. Thank you, and to the fans in India, thank you so much for all the love and support they have given to us as a nation, and especially whenever I'm there, I'm anywhere around the world I go, not only in India, wherever I go, the love I get from Indians and everywhere in every corner of the world, it has been amazing, and people get shocked, like, who is that guy? Like in some countries where people don't know cricket and the Indians comes and they want to take selfies, and the crazy fans, the other day, even though I was in Zuma, we're having a dinner, so the people didn't know about cricket, and few of the people, like, they were Indians, they were working there in that restaurant, and they came up and they were like shouting, so, and everyone was like, what happened? So that kind of love we get from them, that is something which really motivates me, very motivates as a team of Afghanistan, and but I can't express that kind of words that we get the love from Indians, but we're so lucky, and hopefully in future we get the kind of chance again to play the home games in India, where most of us, the team and the players as well, they miss to play in India, especially in Greater Noida, Dehradun, in Lucknow. But in future we hope that does happen again, and we get that opportunity to play the home games in India again. And but their love has been amazing, and their support everywhere I go, everywhere they see, all the players, they get so much love. But thank you so much for all of this. I try our best to keep entertaining and keep doing well. Thank you so much, Rashid. I wish you all the best. You're looking super fit because clearly you're running 2 kilometers in less than 8.5 minutes at 40 degrees. So I wish you all the best. Go kill it, and all the best to Afghanistan for the Asia Cup and for the World Cup. Thank you so much. Take care. Thanks, Rashid.